Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the course of action. Let's start. Assalamu alaikum students. We are at the light board, and as I have told you in the intro, today we are going to discuss another important question of logical reasoning, that is regarding course of action. Now course means route or the way, the path, passage. अब ये वो चीज़ है लॉजिकल रीजनिंग की जो कि probably the easiest question to attempt है आप लोगों के लिए. Why? Because we do it every day. Every day we are faced with certain situations. हमें कुछ ना कुछ मसाइल जो है वो आते रहते हैं, कुछ ना कुछ problems, कोई ना कोई hiccups जो है we face it every day, and then we are asked to find solutions. फिर हमसे कहा जाता है कि भाई इसका क्या probably इसका solution जो है वो क्या हो सकता है. So that is what we do every day. कितनी बार ये होता है कि आपको आपके दोस्त एक मसला लेके आ जाते हैं, ये यार प्रॉब्लम है, अब क्या किया जाए. तो वो जो अब क्या किया जाए का क्वेश्चन है, दैट इज एक्चुअली कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन में भी यही है कि सर्टेन सिचुएशन विल बी गिवन. एक सिचुएशन दे दी जाएगी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, एंड यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड द पॉसिबल सोल्यूशन. कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब यही है कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, या इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो किस तरह के स्टेप्स जो है वो किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए. दैट इज एक्चुअली व्हाट वी मीन बाय कोर्स ऑफ एक्शन. पैटर्न क्या होगा इसका? स्टेप 1 में क्या होगा? A statement of problem will be given. पहले स्टेप में आपको ये किया जाएगा कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ईदर वे यू कैन पुट इट आउट, आपको एक दे दी जाएगी, मसला बता दिया जाएगा इन शॉर्ट कि ये प्रॉब्लम है. स्टेप 2 में क्या करेंगे? टू possible solutions will be given. अब वो बज़ाहिर सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको पॉसिबल लग रहे होंगे, बट होगा क्या? दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं. These solutions may hold true or false. या तो ये भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? Only one of the solutions is true. ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं. बेसिकली इन दो को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये 5 स्टेटमेंट्स एक्चुअली बन जाएंगी. एक तो ये बन जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू, बोथ सॉल्यूशंस बेसिकली कैन बी ट्रू. सेकंड क्या हो जाएगी? बोथ सॉल्यूशंस में होल्ड फॉल्स, तो ये एक दूसरी स्टेटमेंट बन जाएगी. ओनली वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज ट्रू, ये भी हो सकता है कि ओनली वन फॉलोज या ओनली 2 फॉलोज. तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और फिर एक उसमें ये भी आ जाएगा कि ईदर 1 और 2 फॉलो. तो ये इसमें इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. सो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है और हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना है. people in
certain region are facing severe drought. एक्शंस क्या हो सकते हैं? अब ये एक्शंस हैं एक्चुअली, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए. नंबर 1, गवर्नमेंट should provide financial assistance to the people of affected areas. And the second option is government should immediately provide food, water, and other edible items to the affected area. अब समटाइम क्या होता है कोर्स ऑफ एक्शन में कि आपको दोनों क्वेश्चंस, दोनों ही एक्शंस जो है वो प्राइमरली ठीक लग रहे होते हैं. बट लेट्स गो टू द ऑप्शन फर्स्ट और फिर हम इसको एवेलुएट करेंगे कि क्या है. ऑप्शन अल्फा क्या होगी आपकी इसमें? दैट इज ओनली one follows. Beta, only two follows. Charlie, either one or two follows. Delta, both 1 and 2 follow, and eta is neither 1 nor 2 follows. अब स्टेटमेंट में यही रहने दूंगा सो दैट वी डू नॉट हैव टू रिपीट द ऑप्शंस अगेन एंड अगेन. सो ऑप्शंस यही रहेंगी, इसको हम बाद में चेंज करते रहेंगे या हम उसको उधर लिख लेंगे बाद में. अभी कैरी ऑन करते हैं. पीपल इन अ सर्टेन रीजन आर फेसिंग सीवियर ड्रॉट, ये हमने पढ़ लिया. द सेकेंड थिंग इज कि एक्शन क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द करेक्टिव मेजर फॉर इट? गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पीपल ऑफ अफेक्टेड एरियाज. अपेरेंटली आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है, कहत पड़ा हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए? माली इमदाद की ज़रूरत होनी चाहिए. बट इट इज़ नॉट द केस इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सॉरी, आवर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा, that government should immediately provide food, water and other edible items to the affected areas. वजह क्या है? Because they are facing ड्रॉट. उन्हें कहत का सामना है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं दे हैव बीन लूटेड, दे हैव बीन अफेक्टेड. कोई देयर इज नॉट द केस ऑफ फ्लड. ये फ्लड नहीं है कि जब जहाँ उनके माल असबाब सारा जो है वो बह गया है एंड नाउ दे आर इन नीड ऑफ मनी. नो, दे आर नॉट इन नीड ऑफ मनी, दे आर इन नीड ऑफ फूड. ड्रॉट है, कहत है, तो कहत में उन्हें पैसे नहीं चाहिए.
के हाथ में उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फूड चाहिए, क्योंकि पैसे होंगे भी अगर से दे डू हैव मनी बट द आइटम्स, द एडिबल आइटम्स, फूड आइटम्स वहाँ अवेलेबल ही नहीं है, तो वो उस पैसे का या उस रकम का आखिर क्या करेंगे. सो अ राइट ऑप्शन विल नॉट बी बोथ 1 and 2 फॉलो, इट शुड बी ओनली 2 फॉलोज. सो ये एक लॉजिकल सी कंक्लूजन आपने ड्रॉ करनी होती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, नेचर ऑफ प्रॉब्लम को देखते हुए, नेचर ऑफ इशू को देखते हुए, कि व्हाट कैन बी द लॉजिकल सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू. एक और क्वेश्चन करते हैं. Airline XYZ has been facing losses for the past 30 years. Now, what can be the course of action? One is company XYZ should be directed to cut down its expenses. And number 2, government should provide now we have the question that company XYZ should be directed to cut down its expenses, and government should provide financial assistance of rupees 1000 million per month to company XYZ. अब यहाँ भी आपको लगता है अपेरेंटली कि यार बात तो सही है, अगर वो कंपनी लॉस फील कर रही है तो गवर्नमेंट इसीलिए होती है ना कि एयरलाइंस या कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो तो उनको क्या किया जाए, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, and as a result they may start improving. But the question is that this company has been facing losses for the past 30 years. 30 साल हो गए इस कंपनी को लॉस फेस करते हुए. सो अब बजाय इसके कि आप उसको कहें कि अपने भाई एक्सपेंसेस कट डाउन करो, एंड इफ यू वांट टू बी इन द मार्केट, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, वर्क एफिशिएंटली. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, अगर हम ये कहें कि नहीं भाई ये भी कह दें और साथ उसको 1 अरब रुपया महाना और भी देना शुरू कर दें, 1000 मिलियन देना शुरू कर दें, व्हाई? देयर इज नो नीड फॉर इन्वेस्टिंग इन सच अ बैड परफॉर्मिंग कंपनी. इसलिए इस क्वेश्चन के लिए our option will be option alpha, that only one follows, because the company needs to cut down its expenses. Such an underperforming or a bad performing company should not be given any subsidy, any assistance from the government. So अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और लेट्स सी कि उनमें हम अपनी बाकी ऑप्शंस कैसे फिट करते हैं. Ladies and friends, we have another question for you. Question number 3.
exporters are alleging that the commercial banks are not following the directives of State Bank exporters are alleging that the commercial banks are not following the directives of State Bank of Pakistan. Now, what can be the course of action? Number one is all the concerned officers in commercial banks should be suspended. And the second one is State Bank of Pakistan should not give directives to commercial banks regarding exports. And the options we have, I'm writing them down here and they will be permanently written here. Only one follows. Beta, only two follows. Charlie, either one or two follows. Delta, both 1 and 2 follow, and eta, neither 1 or 2 follows. Now, if we consider that problem, it is evident that at the first place, let's talk about the second one first, because that is a clear-cut thing, that State Bank of Pakistan should not give directives to commercial banks regarding exports. This is obviously impossible. State Bank of Pakistan का काम ही क्या है कि commercial banks को regulate करना, उनको directives देना. So this second course of action तो clearly क्या है? It is impossible. On the other hand, this one, the first one, it looks very attractive to you, very alluring sort of a thing to all of you कि हाँ ये हो सकता है कि उनको फौरन ही क्या किया जाए, उनको बरतरफ कर दिया जाए, suspend कर दिया जाए. But it should be actually suspended. उनको क्या किया जाए? Suspend कर दिया जाए. But tell me, is this the solution? No. उनको हटाने से क्या होगा? Implement तो नहीं होगा ना. So the core thing is to implement the directives
ये है ना, implementation of the directives is our core concern. Removing the officers is not the right thing to do. Rather, they should be forced to act upon the directives of State Bank of Pakistan. So ये कोई solution नहीं है कि उनको remove कर दिया जाए. They should be grilled. They should be asked, or they should be made to follow the directives of State Bank of Pakistan. So here in this question, our right option will be option eta. Neither one nor two follows. Although कि first one आपको बड़ी attractive लगती है, alluring लगती है कि हाँ ये तो बिल्कुल होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए. सज़ा प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि सज़ा मिलने से वो काम तो ठीक नहीं होगा ना. हमने क्या करना है, कोर्स ऑफ एक्शन, सो दैट कि ये प्रॉब्लम क्या हो, इरेडिकेट हो सके. सो दिस इज हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क. ओके, एक और एग्जांपल हम करते हैं. A large number of students have been migrating from Pakistan to the developed countries after completing their studies. This is nowadays, you know, it is a major concern for all of us. Brain drain जिसको आप कहते हो, कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद they do not stay here, they flee out of the country. वो यहाँ से क्या होते हैं, भाग जाते हैं. अब इसके courses of action क्या हो सकते हैं? Number one, all the students studying at government universities should be forced to sign a bond that they will work for the country for at least 10 years. And beta, all the students studying at government universities should be asked to pay full fee if they want to move out of country. Now you have the opinion कि brain drain हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं,
दो तरीके हो सकते हैं. एक तो ये कि स्टूडेंट्स को कंपेल किया जाए, उनसे एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाए एट द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, एट द स्टार्ट ऑफ द एजुकेशन, दैट बिकॉज वी आर गिविंग यू अ सब्सिडाइज्ड एजुकेशन. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है सब्सिडाइज्ड एजुकेशन होती है, तो उनसे एक बॉन्ड फिल करवा लिया जाए कि बिकॉज वी आर गिविंग यू अ सब्सिडाइज्ड एजुकेशन, दैट इज़ वाई यू मस्ट फिल अ बॉन्ड इन विच यू विल हैव टू प्रॉमिस कि हम 10 साल तक हम इसी कंट्री को सर्व करेंगे. And secondly, all the students studying at a subsidized rate in different government universities, they should be asked to pay the full fee if they want to work out of the country. अगर उन्हें बाहर जाना है तो फिर वो क्या करें, पैसे पूरे पे करें, फिर सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ भी अपेरेंटली आपको लगता है कि उधर आप पैट्रियाटिक होकर जब आप सोचते हैं ना, तो यू फील कि यस दोनों ऑप्शंस ठीक होने चाहिए, बिल्कुल उनसे बॉन्ड फिल कराना चाहिए कि यही काम करें. व्हाई? दिस कैन नॉट बी द केस. दिस इज अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स. यू कैन नॉट कंपेल समवन कि तुमने 10 साल इधर ही रहना है. ठीक है, दिस इज अगेंस्ट द लॉजिक्स, अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल. आप उसको इस तरह से कंपेल नहीं कर सकते. सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज कि ठीक है बेटे, बाहर जाना है, हमारे जो पैसे हैं वो हमें पूरे करके दे के जा, उसके बाद तो जहाँ मर्जी जा, तुझे कंप्लीटली जाने की आज़ादी है. सो इन दिस केस आवर करेक्ट ऑप्शन विल नॉट बी both 1 and 2 follows. It must be only 2 follows. Why? Because the option 1 is against the basic constitutional rights of every individual. इसलिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि 10 साल वो इधर ही रहेगा. ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा शेर लगता है, कहते कि मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, और जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई. जाने वालों को, स्टेटमेंट 1, जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं. सो रोका नहीं जा सकता किसी को, यू विल हैव टू लेट हिम गो. आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसके स्नब नहीं कर सकते. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर दिस चंक. आए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. लीजिए कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं. Question number 5 is, a large number of people in a certain country die due to drinking polluted water. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं इसके? लेट्स चेक. Government should take immediate measures to supply pure water to all parts of the country. That is our option 1, and the second one is people should be provided awareness
regarding the health hazards of drinking polluted water. And again, we have the same options. Option A is only one follows. Beta is only two follows. Only is either one or two follows, and delta is both 1 and 2 follow, and eta is neither 1 nor 2 follows. So we can easily guess from this particular statement that both these steps are necessary for ensuring the health of the people. होना क्या चाहिए? Obviously, government should take immediate actions, immediate measures to provide safe drinking water to everyone. And secondly, people should also be made aware, people should also be provided awareness regarding the health hazards of drinking polluted water. ये दोनों ही काम अपनी अपनी जगह पर होने बहुत ज़रूरी हैं. That is why here our option is both 1 and 2 follow. Now moving on to the next question. There have been numerous incidents of derailment of trains in the hilly areas, especially during the land sliding season. अब लैंड स्लाइडिंग के सीज़न में हो क्या रहा है कि बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं वो डिरेल हो गई हैं, और इसके नतीजे में हुआ क्या है, causing a huge number of डेथ्स. कि बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं वो क्या हुई हैं, डिरेल हुई हैं, ख़ास तौर पे लैंड स्लाइडिंग सीजन के दौरान, और इसके नतीजे में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है. नाउ कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं? एक क्या हो सकता है? Railways should send pilot engines before the
passenger trains to have an idea about the weather and track. Secondly, क्या होना चाहिए? The railways authorities should strengthen the hill slopes with steel meshes so loose boulders may not fall. अब यहाँ पर क्या है? दो चीज़ें हैं कि एक तो क्या करना चाहिए, रेलवेज को क्या करना चाहिए, पायलट इंजन्स भेजने चाहिए बिफोर द ट्रेन कि वो देख सकें कि आगे सिचुएशन ट्रैक की क्या है, या फिर वो ये कर सकते हैं कि उसकी जो स्लोप्स हैं, जो हिल स्लोप्स हैं, उनको स्टील मैश वगैरह लगा के क्या किया जाए, उनको स्ट्रेंथन कर दिया जाए ताकि इन केस ऑफ लैंड स्लाइडिंग पत्थर जो है वो नीचे, लूज बोल्डर्स जो हैं वो नीचे ना गिरे. So here we can easily guess that the correct option is option Charlie. Either one or two follows, because if any one of these actions is done, it will solve the problem. अगर तो वो रेलवे पायलट इंजन भेज दें फिर भी ठीक है, ओके. अगर वो आकर रिपोर्ट दे दें कि जी एवरीथिंग इज ओके, तो ट्रेन भेज दी जाएगी एंड विल नॉट हैव एनी लॉस ऑफ लाइफ. एंड सेकेंडली, अगर ये कर दिया जाए कि स्टील मैश लगा के उनको क्लोज ही कर दिया जाए, तो वो भी क्या है, वो भी बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. सो हियर नॉर्मली यू आर कंफ्यूज्ड कि सर ईदर वन और टू कहाँ आएगा. तो दिस इज एन आइडियल केस वेयर यू कैन यूज ईदर वन और टू. प्रॉबेबली आपको शायद लगेगा इसमें कि इट शुड बी बोथ वन एंड टू, बट नो, बोथ वन एंड टू इसलिए नहीं हो सकता कि दोनों में से जब एक हो जाएगा तो दूसरे की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी. If a pilot train is available and it can go through the track and give us the report that everything is clear, तो फिर हमें ये दूसरा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. और if we have used steel meshes and have protected the whole track from landsliding, then फिर हमें pilot engine रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी. So this is where you use either one or two. Follows that you can take any one of these steps to actually solve the issue. So hopefully either one or two आपको clear हो गया होगा. अब कुछ और examples हम देखते हैं and let's see कि उनके answers क्या हैं. लेकिन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपने, और लेट्स सी कि व्हाट वी हैव इन द बैंक. द स्टेटमेंट इज a massive migration has been witnessed from the rural areas to urban areas due to repeated crop failure. So crop failure के नतीजे में क्या हो रहा है,
एक मैसिव माइग्रेशन, एक टेंडेंसी हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो रूरल एरिया से उठ के कहाँ जा रहे हैं, अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, गाँव से निकल के देहात की तरफ जा रहे हैं. सो कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? कोर्स ऑफ एक्शन 2 हमें दिए हुए. नंबर 1, गवर्नमेंट should provide alternative source of income and secondly people moving to cities should be adjusted by giving jobs. And now we have the same 5 options. Alpha is only one follows, beta is only 2 follows, Charlie is either 1 or 2 follows, delta is neither 1 or 2 follows, and eta is both 1 and 2 follow. Now we can easily guess, I should say, that if the people moving to the cities should be adjusted by giving jobs, it will further enhance that migration. वो तो माइग्रेशन जो है वो तो फर्दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें जो है वो ड्यू कोई अपना नहीं मिल रहा था सोर्स ऑफ इनकम, तो दे माइग्रेटेड टू सिटी and here they were adjusted by the government, they were accommodated by the government, so the migration will enhance, the migration will actually intensify. तो हमने intensify तो नहीं करना, हमने तो क्या करना है, उस migration को रोकना है ताकि रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का बैलेंस जो है वो ख़राब ना हो. So this is why one can easily assume that the correct option will be option alpha, that government should provide alternative source of income, कि वहाँ पर उन्हें जो है वो और different sources of income जो है वो भी generate करने चाहिए, so the people may stay put where they are, ताकि वो वहीं रह सकें जहाँ पर वो मौजूद हैं. So this is how we can guess or we can find out the possible solutions of a certain problem. Now move on to the next one. In the latest census, it has been noticed that male to female ratio is alarmingly low, कि बहुत ही जो है वो कम है, which
poses a risk. ठीक है, इतनी वो रिस्क की हद तक अलार्मिंगली जो है वो कम हो गया है मेल टू फीमेल रेशो, और ऑब्वियसली उसके डायनामिक्स बहुत से इम्पैक्ट जो हैं वो उसके खराब आ सकते हैं. सो कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज the government should reconduct the census, and the second one is people must be encouraged to have more children. Now here you can feel, you can sense that at the first place, why should the government reconduct the census? It doesn't make any sense. बिल्कुल भी इस बात की कोई लॉजिक, कोई तुक जो है वो समझ में नहीं आ रही कि क्यों उसको जो है वो रिकंडक्ट करना चाहिए. एंड रिकंडक्शन ऑफ द सेंसस will not help improve the ratio between male and female. रिकंडक्ट करने से क्या होगा? जो रेशो है वो ही रहेगी, सो उससे रेशो तो इम्प्रूव नहीं होगी. एंड सेकेंडली दिस वन इज ऑल्सो अ फॉल्टी थिंग टू डू, बिकॉज पहली चीज़ तो ये कि इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन कि आप उसको फोर्स करें कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो. वाई? ठीक है, इट इज़ प्योरली देयर चॉइस कि वो मतलब कितने बच्चे पैदा करना कोई चाहता है, नंबर वन. सेकेंडली the other thing is that how can you make sure कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो मेल फीमेल रेशो जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी. इट इज़ इवन पॉसिबल कि मेल फीमेल रेशो जो है वो फर्दर क्या हो, डिटीरियरेट हो जाए, फर्दर जो है वो ख़राब हो जाए, बिकॉज यू नेवर नो कि जो बच्चे पैदा होंगे वो लड़कियाँ होंगे या लड़के होंगे या वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं. सो इट विल नॉट हेल्प इम्प्रूव द कंडीशन और द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल population. So यहाँ हमारी second one में क्या होगा? Neither one nor two follows. ये ना ही ऑप्शन अल्फा वैलिड एक सोल्यूशन है और ना ही हमारे पास ऑप्शन बीटा जो है वो हमारे लिए वैल्यूएबल सोल्यूशन है. सो ये दोनों एक्शंस ही हमारे लिए यूजलेस है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The sale of a particular product has been declining for the last 6 months. कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसकी सेल क्या कर रही है, मुसलसल डिक्लाइन कर रही है. सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल सोल्यूशन? कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? द वन इज at the first place the company should reduce the price and improve the quality of the product. एक जगह तो हम कर सकते हैं ये. नाउ इट मे लुक वेरी अपीलिंग टू यू कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है
कि प्राइस कम कर दें और क्वालिटी इंप्रूव कर दें तो सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी. बट लेट्स लुक एट द सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन. द कंपनी should conduct a study of rival products. अब क्या है? अब देखिएगा, सिनेरियो विल चेंज. देखिए, until and unless we do not know कि what is the cause of that decline, वो जो कमी आ रही है उसकी वजह क्या है, तो जब हमें उसकी वजह ही नहीं पता तो हाउ कैन वी से कि कंपनी को फौरन से उसकी प्राइस गिरा देनी चाहिए. Has it been established that the cause of the reason of that decline is the higher cost? No, it hasn't been established. ये तो कहीं prove ही नहीं हुआ. If it has not been established, then how can you reduce the price? It is absolutely a useless thing to do. ठीक है. So इसलिए पहला काम हम क्या करेंगे? The company should conduct a study of rival products. उसकी जो rival products हैं उसको भी देखें कि भाई उनकी सेल की पोजीशन क्या है. अगर तो वो भी फॉल कर रही हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा, और अगर वो फॉल नहीं कर रही तो फिर डिसीजन कुछ और होगा. So here the right option for us in this third question is option beta, that only 2 follows. Only the second step should be taken and not the first one. So I do hope कि इतने सारे different scenarios से आपको समझ लगी होगी कि basically ये चीज़ें क्या हैं. और बार बार कहता हूँ, it only requires a bit of wisdom and presence of mind, बस. और इसमें ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और कोर्स ऑफ एक्शन में तो बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ें नहीं है. सो अब हम चलते हैं और लेक्चर को क्लोज करते हैं.